Dear student, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing good. Student, this is a workbook of social science for standard 8. And today we are going to start chapter number 7, environmental changes. Okay, in last session we have to done question 1 to 3 in workbook. So today we will start this question number 4. Okay, answer the following questions in 1 or 2 sentence each. First, what is atmosphere or what is meant by atmosphere? The air that envelope earth from all sides is called atmosphere. Second, how is atmosphere polluted? Atmosphere is polluted by the smoke from industries, factories, power station, vehicles and domestic fuel, etc. Third है what is the environmental changes? So changes occurring in the temperature, wind direction, rainfall, etc. due to the global warming are known as the environmental changes. Fourth, what is weather? The condition of temperature, humidity and rainfall in a region of a particular point of a time is called weather. Fifth, what is a climate? An average condition of rain, temperature and moisture for over 35 years in a region is called climate. 6. What is a global warming? Global warming means the unequal and continual rise in average temperature in Earth's climate due to the greenhouse effect and certain gases trap infrared rays. So the temperature of the Earth increase, the planet become warmer. क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर सडनली इंक्रीज होगा जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगी. ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से और इंफ्रारेड रेस है ओके वो ट्रैप हो गए जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है. हाउ डिड प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेटिक चेंज इमर्ज? अगर ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोकार्बन, ये सारे गैस क्या करता है, हीट को रिटेन यानी होल्ड करके रखता है. अगर ये गैस इंक्रीज हो गए तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा जिसकी वजह से बहुत सारी क्लाइमेटिक अकर्स होगी. 8. What is the proportion of nitrous oxide in the atmosphere? So proportion of nitrous oxide is atmosphere is 319 ppm. 9. What increase the proportion of chlorofluorocarbon in the atmosphere due to increased use of foam, plastic, fridge, AC, circuit, aerosol spray, etc. The level of chlorofluorocarbon has increased in the atmosphere. 10. Which are non-conventional source of energy? Solar energy, wind energy, tidal energy, geothermal energy, biogas. These all are non-conventional source of energy. 11. When and where the first global convention to think of ways to protect the environment held? So conferences were held first of the Stockholm, the capital of the Sweden in 1972. फिर कहाँ पे हुई थी? रियो दी जनेरियो जहाँ पे ब्राज़ील में. और वहाँ पे किसके बारे में थिंक किया हुआ था? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के तरीके सोचे गए थे. फिर है विच कंट्री होस्टेड द लास्ट वर्ल्ड कन्वेंशन प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट? सो द कंट्री दैट होस्टेड द लास्ट वर्ल्ड कन्वेंशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट वॉज हेल्ड एट कैंपेन डेनमार्क इन December 2009. 13. What was decided the world meeting and campaign in December 2009? क्या डिसाइड हुआ था? जैसे कि डेवलप्ड कंट्री है यूएस है, वो कार्बन कट पॉलिसी अडोप्ट करेगी और जो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया उसको परमिशन दी जाए कि ज़्यादा कार्बन रिलीज करने की. ओके सो गिवन द एड ऑफ द ट्यून अबाउट $100 बिलियन. 14 है वर्ल्ड ओजोन डे जो 6 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. क्वेश्चन 5 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफली. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट? सो कंट्रीज विच कोल्ड क्लाइमेट रिसीव लेस हीट. ओके सन से लेस हीट रिसीव करते हैं. सो प्लांट और वेजिटेबल का ग्रोथ क्या होता है? बहुत तेज होता है. सो एक अरेंजमेंट किया जाता है हीट बाय हैविंग अ रूफ ऑफ ग्लास एंड क्लोथ टू अलाउ सनराइज टू रीच इनसाइड and sustain heat which is created due to production of carbon dioxide and water vapor. So this is known as the greenhouse effect and this type of farming is called greenhouse farming. फिर list the home appliances of the daily use which add the global warming. So television, refrigerator, geyser, heaters, air conditioner, tube light, bulbs, computer, laptop, all type of vehicles, electric motor and pumps, etc. Third, what will happen if the proportion of CO2 increase in the atmosphere? Increase in the proportion of the CO2 gas has led to an increase the global temperature. 4 है to protect ourselves from the increase in temperature and what type of houses should be constructed. So the doors, windows and roof of our house should be constructed in such a way that they will allow enough sunlight and air into the house. The roof should have the slope and the roof tiles should be so arranged that the roof doesn't get heated. And जो चिमनी होती है वो किचन पे इंस्टॉल की जाती है जिससे स्मोक सारा बाहर चला जाता है.
Question number 6, state the possible adverse effect of the global warming. Write 6 points. First, changes in growth and development of vegetation. Second, nearly 200 glaciers Himalayan have melted. Third, production of pulses and decreased so the around the water level. Fourth, the season cycle is changing. Fifth, the salinity of soil is Gujarat is increased. Sixth, agriculture produce is declined sharply. सेकंड है नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग. उसके 6 पॉइंट कौन से स्टेप लेंगे. फर्स्ट, तो हम सोर्स जितने यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के वो रिड्यूस करेंगे. एफॉरेस्टेशन करेंगे और फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करेंगे. थर्ड, प्लास्टिक के यूज़ का अवॉइड करेंगे. फोर्थ, कंट्रोल पॉपुलेशन. फिफ्थ, एंटीबायोटिक्स इन फूड फॉर एनिमल्स. एंड सिक्स, प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग. Okay, so students, here we completed this chapter and you should write this chapter in your workbook. Okay, so I can send a PDF in your application, so use this PDF and write in your workbook. Okay, this is your homework to fill this chapter. So in next session we will start a new chapter. Okay, so till the next session, goodbye, stay home, stay safe and keep learning.